Good morning, everyone, and welcome to the semi-final one. Got the two captains with me. Captain of DEMPO. It is Rajshekhar Harikant and captain of Priority Titans, Sher Bahadur Yadav. DEMPO. It's Rajshekhar Harikant. Will spin the coin. It's the call and it's come down as tails. So Rajshekhar, what have you decided? We'd like to bowl first. Any specific reasons in this big game, bowling first? Wicket looks slightly damp. I think initially in the first 6 overs, I think the ball is going to lose pace off the wicket. And we'd like to utilize this conditions and restrict them to a decent score. What kind of score are you trying to chase? I mean, it's very difficult to predict any score in this format where there's 5 free hit, 1 golden over. I mean, we'd like to bowl well and then try and restrict them to as low as we can, and then we'll try and chase it down. Any changes in your side? Yes, we have 2 changes. Mohit Redkar is out. Lakshay Garg replaces him. And Sagar Udeshi is out and Aman Khan comes in. Okay, all the best, Captain. Sheru, losing the toss doesn't matter much as sizable ground, and we have seen a lot of matches that have turned quickly. Batting first, what kind of total are you trying to put on the scorecard? We are not kept in mind what total we are going to score on this wicket. Our plan is to just play 20 overs and might be 180 and 90 is a good score on this wicket. Any changes in your side for this particular semi-final? Yeah, one change is there. In place of Ayush Vartak, Deepak Punia has come in for this match. All the best, Captain. So that's the news from the centre. DEMPO challengers have won the toss and they have decided to bowl first.
Good morning, everyone, and all in readiness for this GOICHI League semi-final one. Priority Titans taking on DEMPO challenges. DEMPO winning the toss and deciding to bowl first. Two openers in the middle. Prathamesh Salunke along with Sahil Makwana. And straight away goes over the top. And that will be maximum to start the beginning of this semi-final one. Fullish in length and straight over the top for a maximum. Sairaj Patil has been welcomed to the maximum. It's played nicely and will get a single on that occasion. Score moves on to 7. At the toss, the captain suggesting at least 180, 190 will be a good total on the surface. And the surface looks a bit damp. And the overcast conditions might just help the bowlers at the start, at the beginning, with the good seam presentation. Always good to be back in Sangem for the GOICHI League. And two of the best teams battling it out against each other in the semi-final one. Shimmy down the wicket. Straight to the man. Chance. Oh, not collecting it cleanly. That will just be a single. Gets off the mark with that single. It does Sahil Makwana. Officials today, Sandesh Gaonkar and Punya Palkar. Loads of experience under them. And match referee, Vivek Koramkar, looking after everything. At the toss, he was there and explaining short pitch delivery, and that will be wide. Extras to set a target of around 180, 190. Definitely the power play overs will be very crucial, and also that golden over, which is the speciality of the Sangem cricketers in this GOICHI League. Again, just left it alone. Short pitch delivery, just trying to too many things right now. First one went for maximum. Then the two singles. An extra delivery as well. Short delivery, nicely tucked around, looking for a quick single, and will make it quite comfortably. Score moves on to 10. A lot depends at the start, at the base of this particular batting lineup of Priority Titans. Skipper suggesting losing the toss doesn't matter much to him and his side, as it's a very lengthy batting lineup. They bat deep. But one off wicket too early might just keep them in check.
Nicely played. Down to short third. And will be a single. After completion of 1, it's 11. 11 without loss after 1. Priority Titans. Atharva Ankolekar has been given the ball from the road end. So spin being introduced straight away. Short delivery up in the air, but will fall safe. Nobody there on that particular region, and will just find a single. Will be really interesting. How does Prathamesh Sarunke go about his business as the spin is in operation? Oh, good delivery, outside edge. That's gone through. Short third fielder couldn't quite stop it. And that's another boundary. Just opening the face of the blade. Healthy bit of edge. Nobody at slip. And fast outfield here in Sangem. Very difficult to stop that. Onto the practice pitches as well. And into the boundary. Score moves to 16 with that boundary. Now just trying to close in that gap. Nicely played down the ground and oh, dropped. Chance gone begging. Straightforward chance. You need to take catches at this level. Straight in and straight out. Easy chance has been put down. Short delivery, nicely played, nicely behind it. Dot delivery. Nicely played. Presenting the full face of the blade. Down to extra cover. Will just be a single. Doesn't take any risk at this stage. Sahil Makwana easing the ball past. His partner has looked a bit furious with something. There you go. Again trying to go over the top, missing it completely. Dot delivery to end the over. After completion of 2, it's 18. 18 without loss after 2 overs. Priority Titans. Change in bowling. It will be Aman Khan. Sahil Makwana will be on strike.
Advancing down the wicket, trying to blast that one through the onside, but finding the man at short mid-wicket. Dot delivery to start with. Aman Khan, tall fast bowler. Good prospect from the Mumbai team. Slower delivery, trying just to check the batsman. But that's a wide, extras. Score moves on to 19 with that wide. Aman Khan will be relatively happy with the performance of his good mate in IPL. Shreyas Iyer captaining the side of Punjab Kings. Again, short delivery banged in, and it will be again a wide. That's another wide, 2 wides in succession. Score moves to 20. In case if you have joined just now, then this is semi-final 1 of GOICHI League Season 2. Organized by the SANGUEM cricketers. Priority Titans taking on DEMPO Challengers. Nicely played with soft hands and will pick up a single. So far has looked solid as Sahil Makwana presenting full face of the blades on numerous occasions, and has nothing gone past him. Just that the conditions which are favorable for the bowlers haven't been utilized that well so far. Again, another wide, more extras. Just to loosen things up for Aman Khan in this particular over. That's up in the air. Fielder backpedaling. And oh, good effort, but couldn't quite hold on to it. Second chance that has been put down. This one was a bit difficult. As you can see on the replay, got big on him. Prathamesh Salunke. And then fielder backpedaling. Went for 4. Score moves on to 26. Seems to be in some sort of pain. Maybe might have hurt his ankle. And straight away the physio is running on. Good delivery. Good comeback. As on the sidelines. Turning out to be a very lengthy over this. 3 wides, a boundary as well. Some injury concerned. That's picked up and picked up cleanly. Huge hit for a maximum. Again, short pitch delivery and helped along nicely by Prathamesh Salunke. Score moves to 32.
32 without loss after completion of 3. Still one delivery to go. Still one delivery to go. Officials, one delivery remaining. All the way, Aman Khan from third man has to come back and bowl that delivery. One delivery still remaining in this over. 32 on the scorecard. GOICHI League 2025 organized by SANGUEM cricketers. And some special men have to be thanked for their invaluable support. GOICHI League 2025 powered by Shri Subhash Desai, Minister for Social Welfare. Full toss delivery. Up and over that man. Up and over the skipper. And that's 4. Score moves to 36 with that boundary after completion of 3, going at 12 runs per over. Priority Titans. Talking about the sponsors, Desert and Mo. Priority Constructions, Nilesh Cabral, MLA, Kurchurim, Rajesh Fardesai, MLA Kumbarzua, HDFC Bank, Deepak Amarnath Desai, Yogesh Dalal, Santosh Fardesai, Prasad Naik, aka Pochu, Abhijit Desai, Goa Sponge and Power Limited, JSW Cement, DJ Farms, Shraddha Ispet Private Limited, Chorus Cruise, Ashish Karmalkar, Meher Khan, Rizma Group, Raviraj Upadhyay, Sudesh Salilkar, and Chimatech Projects Private Limited. Change in bowling from the gate end. It will be Lakshay Garg. 36 without loss after completion of 3. Fielding restrictions have been lifted as 5 men are patrolling the boundary now. Down the leg side, and that will be wide. Extras. Just the 3 overs, and the umpires have got their work cut out with too many extras. Bit erratic with the bowling of DEMPO. Nicely played. And that will be a single down to mid-wicket. Many individual prizes. Best batsman sponsored by Dattadas Buse. Best bowler sponsored by Lakshman @ Pramod Naik. Short delivery, pulled away again. And again, this time 1 bounce over the ropes for 4. Just a short arm jab and quickly onto it. All star, the batsman wasn't ready. Man of the final, sponsored by Gurunath Naik, proprietor, Dego Enterprises. Man of the series, sponsored by Raghunath Moraskar, proprietor, Madira Center.
Winners Trophy sponsored by Advocate Tushar Karmalkar in the loving memory of his father, late Vinayak D.S. Karmalkar. Something wrong, something has to be taken care of. Both the officials are looking into it. Prathamesh Sarunke and so back to the game again then. Lakshay will continue. Down the ground. And it's huge. It's out of here. Is the bowler being targeted now? Is he the scapegoat now? All the anger, all the aggression. And straight down the ground. Over the side screen for a maximum. Score moves to 48. Just the fourth over in progress. And definitely, it's a tough battle. Things are just getting to heat up in the middle. Usually it's just the weather. And it's been killing us these days. MSD has been helping a lot with planting many trees. Jokes apart. Seems to be all fine now. A calm head in the middle. Score moves to 48. Again, trying to go over the top. This time much quicker. And touch filler was Lakshay Garg. Dot delivery. Again, will be in oozing with confidence and oozing with some aggression as well. Trying to get some quick runs. Free hit taken. First free hit of the semi-final. Short delivery and pulled away. And pulled away, I think, with power. It's gone all the way. Yes, it has. And with that, 50 up for the priority Titans. He's not holding back. No matter you bowl him full, no matter you bowl him short. He's just knowing one thing, and that is to hit it with power. Second maximum of this particular over. Score moves on to 54. And what started a pretty decent over has gone to 18 now, with one delivery still remaining. And second free hit taken as well.
This time, no proper timing. But will find a man at extra cover coming in to stop that. Will just be a single after completion of 4. It's 55. 55 without loss after completion of 4 overs. 19 runs coming from that Lakshay Gargova. As coming back to that list of sponsors, runners-up trophy sponsored by Ankush Gawas in the loving memory of his father, late Prakash Gawas. And a big thank you to Goa Cricket Association and all the office bearers. Well, a tournament of this class, when you host it, you need a lot of sponsors. And these sponsors have really embarked their way and provided a lot of help for the Sangem cricketers. Sangem cricketers are in debt to their service in goodwill and kind, and also financial aid that has been provided. The entire committee of Sangam cricketers would like to thank each and every one of them. Change in bowling. It will be spin from the other end. Manish Kakode has been introduced in the bowling attack. Let's see if we can create some inroads. Good delivery, quick delivery from the leggy. Starts off with a dot ball, 55 without loss. Prathamesh Sarunke in some beast mode right now. Nicely played with soft hands, down to short third. Chance. The fielder has to be very quick. Now the single taken. Score moves to 56. At this rate, the projected score just being showed at 258, 250, 260 at this kind of rate. But you just don't fancy this side from DEMPO. They are not just mugs, they are quality. Oh, good delivery, outside edge, past. Spin will play an important role in this particular encounter. Up and over, in the air, chance. And taken easily. Aman Khan taking that catch. And the first wicket down. It's Sahil Makwana who has to depart. Just trying to go up and over extra cover, but was completely deceived in flight. Slower through the air, and the batsman already threw the shot. It's 56 for 1. Priority Titans. New man in Vikas Singh. 56 for the loss of 1. And Manish Kakode providing that breakthrough that they were looking after.
Left-handed batsman on strike. Certainly some change in tactics. Manish Kakode pitched it short and will get a single to get the mark for Vikas. Has been a pretty tidy over this. .57 for 1. Just the 2 of this over so far and that wicket. And let's see how does Prathamesh Sarunke go about his business from now on. Up in the air and miscued over the man at covers and will pick up a couple. 2 more to total. Excellent over coming to an end. Just the 4 coming from it and a wicket by Manish Kakode. After completion of 5, it's 59 for 1. Priority Titans. Coasting along nicely, but this over has just pulled things back for DEMPO challengers. Meanwhile, it will be change in voice. At the start of the 6th over, it will be Banti Udelkar. Sir, with you. धन्यवाद श्याम कलंगुटकर जो कि अंग्रेजी समालोचन कर रहे थे। फिलहाल आप जो मैच देख रहे हैं वो प्रायोरिटी टाइटंस वर्सेस डेम्पो चैलेंजर्स के बीच। हालांकि डेम्पो चैलेंजर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और सलामी बल्लेबाज जो कि प्रथमेश साळुंखे बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए बिल्कुल 47 के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं। सिर्फ 19 गेंदों का सामना किया। इसी बीच विकास सिंह सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद यहाँ पे सीधा स्ट्रेट खेल दिया। हालांकि 1 रन मिलता हुआ। तो अब प्रथमेश साळुंखे इस टूर्नामेंट में बढ़िया बल्लेबाजी की है। अब तक लाजवाब खेल का प्रदर्शन, बिल्कुल आक्रामकता के साथ खेलते हुए प्रथमेश साळुंखे। इसी बीच वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन मिल चुका है और इस ये गेंद उठाने की कोशिश की, गेंद और बल्ले का मिलाप नहीं हो पाया। गेंद को गैदर किया, कीपर ने वापस कर दिया बॉलर के लिए। यहाँ पे पॉइंट की दिशा में खेल दिया है। बिल्कुल फील्डर जहां तैनात थे वहीं पे खेल दिया। 1 रन का इजाफा होता हुआ। स्कोर 61, 61 रन, 61 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ये गेंद घुमाकर उठाने की कोशिश की, लेग स्टंप के काफी बाहर। वाइड बॉल का इशारा, स्कोर 62। हालांकि 62 स्कोर हो चुका है। एकमात्र बल्लेबाज आउट हुए साहिल मकवाना जिन्होंने 6 रन बनाए। यहाँ पे 1 रन स्कोर इस रन के जरिए 63 रन, 6th ओवर इन प्रोग्रेस। 63 रन हो चुके हैं। ये गेंद यहाँ पे
इसी बीच अगली गेंद, यहाँ पे रन लेने की कोशिश की, और ये 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 63 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 63 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। तो बिल्कुल बढ़िया मैच चल रहा है। पहला सेमीफाइनल जो कि प्रायोरिटी टाइटंस और डेम्पो चैलेंज के बीच। मनीष काकोड़े बहुत ही बढ़िया पहले ओवर में गेंदबाजी कर चुके थे, अब अपने नीचे दूसरे ओवर में आ चुके हैं। तो अब प्रथमेश सालुंके, प्रथमेश के लिए अगेन मनीष काकोड़ी की। ये उठा दिया है और ये बिल्कुल बढ़िया, देखना होगा क्या हवाई फायर। जी हाँ, और ये 50 रन पूरे हो चुके हैं। प्रथमेश सालुंके बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम को सेफ जोन, एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने में बिल्कुल बेहतरीन योगदान देते हुए प्रथमेश सालुंके पूरे टूर्नामेंट में उनकी बल्लेबाजी आक्रामक रही है। बिल्कुल हमलावर होते हैं जब बल्लेबाजी के लिए आते हैं। यहाँ पे इस बार रक्षात्मक तरीके से खेल दिया, लेकिन गेंद और बल्ले का मिलाप नहीं हो पाया। गेंद को गैदर किया हुआ कीपर ने वापस कर दिया बॉलर के लिए। मनीष काकोड़े फिर से तैयार। ये गेंद यहाँ पे रन लेना चाहते थे विकास सिंह, काफी आगे निकल चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर प्रथमेश सालुंके ने उनको वापस भेज दिया। सही फैसला था, वरना रन आउट होने का खतरा मंडरा रहा था। ये यहाँ पे एक रन ले लिया है, इस बाय का इशारा, और इस रन को जोड़ते हुए स्कोर 71। ये गेंद यहाँ पे बिल्कुल फील्डर, ओ वहां पे वो थ्रो, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी, हालांकि रन नहीं मिल रहा था, लेकिन ओवर थ्रो पे रन मिल चुका है। मनीष काकोड़े जो कि गेंदबाजी कर रहे थे और 7 ओवर के समाप्ति के बाद 72 72 रन 1 विकेट के नुकसान पर विकास सिंह और प्रथमेश सालुंके। प्रथमेश सालुंके बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी, हाफ सेंचुरी जड़ दी इस पहले सेमीफाइनल में, और एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए प्रायोरिटी टाइटंस जितने देर ज़्यादा प्रथमेश सालुंके वहाँ टिके रहेंगे, उतना बड़ा लक्ष्य हासिल करने की कोशिश रहेगी प्रायोरिटी टाइटंस की। तो देखते हैं
इस और एक रन खाते में जुड़ता हुआ। रामनाथ है गेंदबाज। यहाँ पे दिशा से भटके वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन मिल चुका है। इसी बीच रामनाथ जो कि रोड एंड से गोइछी लीग, ये टूर्नामेंट पिछले 23 सालों से चलता आ रहा है। ये साल 24th ईयर। फिर एक बार वाइड बॉल का इशारा और सांगेम क्रिकेटर्स जो कि इसके प्रेसिडेंट हैं तुषार कलमरकर, सेक्रेटरी अमरीश मराठे और ट्रेजरर हैं नारायण मसूरकर। अपने सभी साथी मेंबर्स के साथ एक बढ़िया आयोजन यहाँ पे हो रहा है जो कि हम गोवा क्रिकेट एसोसिएशन कोर्टाली सांगे के मैदान में हैं। इसी बीच गेंद काफी देर हवा में थे, लेकिन दो फील्डर के बीच में ये गेंद गिरी और स्कोर जा पहुंचा है 78 रन, 78 for 1। 8वीं ओवर जारी है, 78 रन हो चुके हैं। ये गेंद कड़ा प्रहार किया, हवाई फायर कर दिया है। बिल्कुल ये गेंद हवाई यात्रा के लिए निकली है। 6 रन और स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 84 रन। बिल्कुल बढ़िया प्रथमेश साळुंके 61 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे हैं। सिर्फ 29 गेंदों का सामना किया है। बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ प्रथमेश साळुंके हमलावर होते हुए, आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए बिल्कुल अपने बाहें खोल दी है। और दूसरी छोर विकास सिंह उनका बढ़िया साथ निभा रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, ज्यादा स्ट्राइक दे रहे हैं प्रथमेश साळुंके को। इसी बीच अगली गेंद अथर्व अंखोलेकर जो कि अपनी निजी दूसरी ओवर में चल रहे हैं। गेंद का इंतजार, गेंद आ चुकी है जो कंपाउंड के बाहर जा चुकी थी, तो वही गेंद वापस मैदान में आ चुकी है। अथर्व यहाँ पे गति में परिवर्तन, लेकिन उतने ही चुस्त फुर्तीले थे बल्लेबाज प्रथमेश, हल्के हाथ से प्लेस कर दिया 1 रन के लिए। अथर्व अंखोलेकर फिर से तैयार रोड एंड से। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए ये गेंद उठा दिया है बिल्कुल कमेंटेटर बॉक्स के सामने। ये हवाई यात्रा पे गेंद निकली है, लाजवाब बल्लेबाजी। अब यहाँ पे विकास सिंह अपने बाहें खोलते हुए उन्होंने भी ध्यान में लिया कि एक छोर से प्रथमेश साळुंके बिल्कुल बढ़िया प्रदर्शन करे तो क्यों मैं न करूं, और उन्होंने भी अपनी बाहें खोल दी हैं। इस 6 रन के जरिए स्कोर 91 for 1 आफ्टर 8 ओवर। 8 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 91 for 1। बिल्कुल गेंद के पिच तक पहुंचे और
स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से एक बढ़िया छक्का जड़ दिया विकास सिंह ने। प्रायोरिटी टाइटंस और डेम्पो चैलेंजर्स के बीच ये मैच। प्रायोरिटी टाइटंस पहले बल्लेबाजी करते हुए, इसी बीच 9वें ओवर का आगाज होने जा रहा है। देखते हैं यहाँ पे एक रन तो बढ़िया, और वहां पे क्या ओवरथ्रो नहीं, सिर्फ एक रन। इस एक रन के जरिए स्कोर में इजाफा। इसी बीच मनीष काकोड़े मनीष काकोड़े बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। एकमात्र सफल गेंदबाज अपने तीसरी ओवर में चल रहे हैं। सिर्फ 13 रन दिया और एक शिकार कर चुके हैं। दूसरी शिकार की तलाश में है मनीष काकोड़े। और यहाँ पे स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया है, बिल्कुल तीर के माफिक स्ट्रेट ड्राइव, 4 रन्स, स्कोर 96 फॉर 1। अगर इसी गति से गए तो 226 का प्रोजेक्टेड स्कोर है। बिल्कुल बढ़िया स्ट्राइक रेट यहाँ पे 11.29। यहाँ पे बिल्कुल कारपेट शॉट खेल दिया है, मैदान को चीरती हुई गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर ने रोका और एक रन का इजाफा होता हुआ, स्कोर 97। 9th ओवर इन प्रोग्रेस। मनीष काकोड़े फिर से तैयार पेप्सी एंड से। इसी बीच अगली गेंद, ये स्विच हिट खेलने की कोशिश और उसमें कामयाब भी हो चुके हैं और एक रन खाते में जुड़ता हुआ। मनीष काकोड़े बिल्कुल लगातार कोशिश में लगे हैं कि किसी भी हालत में और एक विकेट हासिल किया जाए। ये गेंद यहाँ पे और एक रन का इजाफा होता हुआ। इस रन के जरिए ओवर की समाप्ति हो चुकी है और तो इसी बीच अगली ओवर का इंतजार। तो इसी बीच रोड एंड से साहिल मकवाना 10 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन बनाकर एकमात्र बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। ये गेंद यहाँ पे और एक रन का इजाफा,
सहराज पाटिल ने 1 ओवर डाला, 11 रन दिए, कोई सफलता नहीं। अथर्व अंकोलेकर 2 ओवर डाले, 25 रन दिए, कोई सफलता नहीं। अमन खान 1 ओवर 18 रन, कोई सफलता नहीं। लक्ष्य गर्ग 1 ओवर 19 रन, कोई सफलता नहीं। मनीष काकोड़े 3 ओवर 19 रन, एक मात्र सफलता जो कि उनके खाते में गई है। रामनाथ गांवकर जो कि 1 ओवर 5 रन, कोई सफलता नहीं। यहाँ पे शॉर्ट पिच गेंद तो विकास सिंह और प्रथमेश साळुंके इस दूसरे विकेट के लिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से साझेदारी जो है वो पनप रही है। स्कोर 99 फॉर 1। ये फुल टॉस गेंद उठा दिया है, फील्डर को पाया, टाइमिंग गलत और ये बिल्कुल यहां पे आउट हो चुके हैं। बिल्कुल फील्डर के हाथ में ये गेंद गई और लक्ष्य गर्ग वहां पे फील्डर थे, उन्होंने इस कैच को लपक लिया और दूसरी विकेट का पतन हो चुका है। प्रथमेश साळुंके बहुत सारे इस टूर्नामेंट के लिए हमें योगदान देने वाले नामी हस्ती हैं, उनके नाम पहले इनिंग के बाद हम आपके नज़र में ज़रूर लाएंगे। इसमें ये टूर्नामेंट बिल्कुल पावर्ड बाय सुभाष फलदेसाई जो कि सोशल वेलफेयर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ गोवा। इसी बीच नए बल्लेबाज धीरे धीरे क्रीज की ओर बढ़ते हुए अब आए हैं। तो देखते हैं विकास सिंह वहां पे एक छोर से बिल्कुल तैयार है और प्रथमेश साळुंकर 33 गेंदों का सामना किया, 65 रन बनाए, बिल्कुल 6 करारे छक्के और 4 चौके। एक रन यहां पे इस 1 रन को जोड़ते हुए 100 रन हो चुके हैं। 100 अप, प्रायोरिटी टाइटंस। 10वीं ओवर जारी है। 10.42 ये है रन औसत प्रति ओवर। अमन खान की ये गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा। 101 फॉर 2। ये गेंद उठा दिया, शॉर्ट पिच गेंद थी, फायदा उठाया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से, ये लगा गोइची लीग 6। तो बिल्कुल करारा छक्का जड़ दिया है, गेंद को सीधे हवाई यात्रा पे भेज दिया। विकास सिंह और सनवीर सिंह ये 2 बल्लेबाज, सिंह इज किंग। यहाँ पे 1 रन तो मिल जाएगा। वहां पे थोड़ी सी मिसफील्डिंग, अगर ठीक तरह से कलेक्ट कर पाते तो बिल्कुल ये रन आउट हो सकते थे।
दोनों ही बल्लेबाजों में गलतफहमी, लेना रन है या नहीं, हाँ ना करते हुए आखिरकार मिस फील्डिंग के जरिए ये रन उनको मिल चुका है। तो 10 ओवर हो चुके हैं, स्कोर 108 फॉर 2। जैसे अब गेंदबाजी में बदलाव, वैसे कमेंटेटर बॉक्स में भी बदलाव। हमारे अंग्रेजी समालोचक श्याम कलंगुटकर। Thank you, Bunty Bhai. 108 for the loss of 2. Coasting along nicely at the moment. Sanveer Singh, Vikas Singh in a partnership. Aman Khan just has finished his second over. Apologies, it's 109. 109 for 2 after completion of 10. Halfway stage in this innings of Priority Titans. Well, to carry out such a big tournament, you need some sponsors, and those sponsors have really put in a lot of hard work, put in a lot of efforts in giving you these live images. This particular tournament at the top level in the Goan Trading Circle. Quick look at all the sponsors, powered by Shri Subhash Fardesai, Minister for Social Welfare and Desert and more. Priority Constructions, Nilesh Cabral, MLA, Kurchuram, Rajesh Fardesai, MLA, Kumbarzua, HDFC Bank, Deepak at the rate Amarnath Desai, Santosh Fardesai, Prasad Naik, okay, Pochu, Abhijit Desai, Goa Sponge and Power Limited, JSW Cement, DJ Farms. We'll come back to that list in a short while. Meanwhile, Gaonkar will continue from the Pepsi end and free hit taken. Up in the air and way over the side screen. Another hit, this time from Vikas Singh. Huge hit over the bowler's head, over the long on's head for a maximum. Score moves to 115 with that maximum. And plenty of balls being given in. This batting has also propelled from the start. First delivery went for a maximum, and since then, the batsmen of Priority Titans are taking a lot of chances, have been aerial and have been pretty decent with their hitting. Clean striking. Previously it was from Prathamesh Saranke. Now Vikas Singh joining the party. In total of 3 free hits have been taken. Nicely played in the gap. Straight to the fielder. Oh, fumble, and that's for maybe not reading the spin on that one.
It just evaded him. And that's 4 more. 6 and a boundary now. And the bowlers are taken to slaughter right now. In the gap, through the covers. That will be another boundary. Score moves to 119. Nicely played with soft hands and will pick up a single. $120 on the scorecard. That has been the story so far of Priority Titans. Talking about the DEMPO, on the contrary, no bowler has looked really good. Yes, the 4th free hit has been taken. And this time it will be up in the air. Fielder getting underneath. Will be taken, but will pick up 2. 2 more runs added. Score moves to 122. Again, this time touch shorter. And this time Arjun does well, Anand does well. Will just be 1. Score moves to 123. 11th over in progress. 9 more was remaining. And definitely asking to get towards that 200, 210 mark. Good delivery. It went the other way. Dot delivery to end the over. After completion of 11, it's 1, 2, 3. 1, 2, 3 for 2 after 11. Priority Titans. Signal comes from the umpire that this will be the golden over. Oh, just wide. And that will be a boundary. Slower delivery. Outside edge. And the short third man fielder couldn't quite get there. Difficult chance. And that's 4. In the gap. And boundary to start with in this particular over. Has been the story of the challengers so far. The bowlers have been going for plenty. You get a boundary of the very first delivery, it becomes a lot more easier to play out the over. Short delivery banged in. And down to cow corner will just be 1.
Full toss delivery in the air, chance and gone. Straight to Rahul Mehta. Toe into the bat. Vikas trying to just play to that man, but couldn't quite. Rahul Mehta posted at square leg, taking that catch. And the third wicket down of Priority Titans. This time it's Vikas Singh who has to depart. New man in Pat Sahani. This being the golden over. You get double the rewards in this particular over. Nicely played. And straight to the man. Sairaj Patil continuing from the gateway end in this golden over. Nicely played. And that will be for... That went like a tracer bullet. Quickly off this Sangem deck. Fast outfield. And no one stopping that. Well, the fielder at long off had to move 2 or 3 meters. But he moved just 1 to pick it up from the boundary. Back past the bowler. Another 4. Intentions pretty clear. As far as the Priority Titans are concerned, they are not dropping any towels at the moment. Aggression at its absolute best. Nicely played, straight to the man, straight to the skipper. It'll just be 1. That's the over done. That's the challenge over done. So score moves on to 145 after that golden over. 11 was scored and 22 that you'll get. So double what you scored. Manish Kakode has been brought back in. 145 for 3 after completion of 12. Manish Kakode again has been introduced in search of wicket just to stop the extended run of low. 19 for 1 in his 3 overs, this being his last. Flat batted down the ground on the bounce to the fielder. Will just be 1. Plenty of batting to come as far as the Priority Titans are concerned, but this pair holds the key. Prathamesh Sarunke earlier
with that strong approach at the start. And now these two men need to get a partnership to take them towards that 200, 210 mark. 146 for 3. And currently sitting very pretty. Titans. Nicely cut away and will get a single quite comfortably. Not 100% that field, maybe having a niggle. Nicely bowled and nicely played as well with soft hands. Quick single. That will be overthrows. And 2 more runs. In total, 2 runs added to the tally. Score moves to 149. 149 for 3. This being the 13th over in progress. Again, just trying to pull that one, maybe whack it on the onside between the mid wicket and the square leg fielder. Missed out. Oh, good delivery. Excellent bowling. Fast turn and completely beaten. All ends up. Sanveer Singh, excellent delivery. Nicely bowled again and will pick up a single. Single 20 over after completion of 13. It's 150. 150 for the loss of 3 after 13 overs. Priority Titans. Put into bat by the DEMPO challengers after winning the toss. 150 for 3 after 13 overs. 2 men in the middle, Parth Sahani and Sanveer Singh. Change in bowling, swapping ends this time. Ramnath Gaonkar has been brought back into the bowling attack, this time from the gateway end. And again a change. Sairaj Patil has been brought in. Maybe some different kind of tactic that has been adopted by Rajshekhar Harikant in this last few overs. Maybe just to stop the extended run of flow. Needs an extra man inside the ring. Shimmer down the wicket. Straight to Rajshekhar. A bit of fumble. And will pick up a single quite comfortably. Score moves to 151. Brings the left-hander on strike. Parth Sahani batting on 2. And just trying to run it down to third man. Missed opportunity. The game about all power and finesse. Delicacy also very important.
will really have to pat their backs if DEMPO can restrict the Priority Titans under 200 from here on. Down the leg side. But this kind of bowling, you are going for plenty. Easy delivery on the leg stump and helped along by Parth Sahani. Sairaj Patil just missing his line on that occasion and whipped quickly by Parth. Score moves to 155. That's up in the air. And it will be one bounce over the ropes for 4. I was just waiting for the umpire signal. Or is it gone all the way? I'll definitely have a look. Certainly the replay will tell us. So that will be a boundary. 2 boundaries in succession. This time just plays it with soft hands and will pick up a single. Being the 14th over in progress, 160 on the scorecard, 160 for 3. Advancing down the wicket. And that's just majestic, gorgeous. Timed it to perfection. 1 or 2 steps. And you can see on the replay. Absolute class on that occasion. Through the covers for 4. To sign off the 14th over. 14th over, done and dusted. It's 164 for the loss of 3. Going at 11.71 runs per over currently. And with this kind of approach, definitely the DEMPO challengers will have to bat out of their skin to chase down a mammoth total in an excess of 210, 220. Change in bowling from the Pepsi end. It will be Atharva Ankolekar. 2 overs for 25. Again, not a bit of a outing that he would have liked. Down the leg side, straight to the man. Good work. Dot delivery. 164 for 3. Nicely played. And will pick up a single. GOICHI League 2025, powered by Shri Rajeshwar Desai. Subhash Desai, Social Welfare, Minister for Social Welfare. Prathamesh Sarunke batted really well at the start. 64 of 34 deliveries, 6 maximums and 4 boundaries. Just created some room for himself. Straight to the field at point. Will be a dot delivery. Sahil Makwana went early for 6.
Vikas Singh, 36 of 19, 3 maximums, 2 boundaries. Sanveer Singh and Parth Sahani in the middle, 24 and 12 apiece to them. Well, talking about the bowling, pick up the bowlers, Manish Kakode. This one swept and swept away from the reach of the fielder. Just wide of him. Bowler doesn't look happy. And why wouldn't he be? Nothing that has been given by that fielder. Just away from him. And maybe he was slow to react on that occasion. Score moves to 166 for 3. Talking about the bowling of DEMPO. In fact, that gone all the way for maximum. 172 for 3. This time along the carpet, straight to the fielder. Will just be 1. Sairaj Patil started off with 3 overs, 36 for 1. Atharva Ankolekar in the bowling attack right now. Aman Khan has gone for plenty as well, 2 overs, 29 for 1. Lakshay Garg, only the over that he has bowled, gone for 19. Nicely played, and that's for majestic from Sanveer Singh. 2 of the cover drives that we have seen from him. And another boundary this time. 15 overs done and dusted. It's 177 for 3. Priority Titans against the DEMPO challengers in this semi-final 1 of GOICHI League 2025. Quick look at all the sponsors. Amay Kosambe, businessman, SANGUEM Goa. Ashish Karmalkar, businessman from SANGUEM. Books prescription. And this entire GOICHI League has been powered by Shri Subhash Desai, Minister of Social Welfare. 15 overs done and dusted, 177 for 3. Priority Titans, it will be change in voice. It will be Bunty sir in the commentary box. धन्यवाद श्याम कलंगुटकर जी, जो कि हमारे अंग्रेजी समालोचक स्कोरर हैं विवेक। इसी बीच अगली गेंद रोड एंड से ये उठा दिया है, कड़ा प्रहार किया, बिल्कुल क्लियर कर देगा ये बाउंड्री। हवाई यात्रा पे गेंद निकली है, 6 रन। इस 6 रन के साथ स्कोर गतिमान होता हुआ बिल्कुल जा पहुंचा 183। गेंद की लंबाई को जांचा परखा, गेंद तक पहुंचे और बिल्कुल कड़ा प्रहार करते हुए 6 रन बटोर लिए हैं। पार्थ साहनी और सनवीर सिंह बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये फिर से वही इंतजार और ये 6 रन हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हमारे जो कैमरामैन हैं उनके बाजू से ये गेंद निकली 6 रन के लिए। इस 6 रन के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 189, 12.33 रन औसत जो हैं इसको बरकरार रखते हुए अगर इसी रफ्तार से गए तो प्रोजेक्टेड स्कोर जो है 247 तक जाएगा। तो पार्थ साहनी देखते ही देखते 12 गेंदों का सामना करते हुए 31 रन पर जा पहुंचे हैं। सनवीर सिंह जो कि 17 गेंदों का सामना किया, 28 रन बनाए। बिल्कुल 189 पर स्कोर जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर।
धमाकेदार बल्लेबाजी करते हैं, हर गेंद के पीछे पड़े हैं पार्थ और सनवीर। यहां पे फिर से उठाने की जरूर कोशिश की, गेंद गई स्क्वायर लेग की दिशा में। अपने आप से काफी नाराज सनवीर सिंह, मौका बना था ऐसा उन्हें लगा। फिलहाल 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ा। इस रन के जरिए स्कोर 190। रामनाथ गांवकर रोड एंड से। ये बढ़िया गेंदबाजी, लाजवाब वापसी करते हुए डॉट गेंद निकाली है रामनाथ गांवकर, जो कि तीसरी अपने निजी ओवर में चल रहे हैं। अब तक 32 रन दिए हैं और कोई सफलता उनको प्राप्त नहीं हुई। यहां पे बिल्कुल फील्डर को पाया। राजशेखर हरिकांत जो कि कप्तान है डेम्पो चैलेंजर्स के, ये स्विच हिट खेलने की कोशिश की, पहले से ही तैयार थे, लेकिन गेंदबाज रामनाथ गांवकर ने पहले भाप लिया कि बल्लेबाज स्विच हिट खेलने वाले हैं, तो उन्होंने गति में परिवर्तन किया। स्कोर 190 रन 16 ओवर के समाप्ति के बाद 190 फॉर 3। प्रथमेश साळुंके बढ़िया बल्लेबाजी की, 34 गेंदों का सामना किया, 64 रन बनाए, उसमें 6 करारे लंबे छक्के शामिल और 4 चौके। साहिल मकवाना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, 6 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना किया। विकास सिंह बढ़िया योगदान दे चुके हैं, 19 गेंदों का सामना किया, 36 रन बनाए, उसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल हैं। सनवीर सिंह खेल रहे हैं, 20 गेंदों का सामना किया, 28 रन पर खेल रहे हैं। और पार्थ साहनी 13 गेंदों का सामना किया, 32 रन पर खेल रहे हैं, उसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल हैं। हालांकि सनवीर सिंह ने 4 चौके लगाए हैं। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो रन औसत है उसको बरकरार रखते हुए दोनों बल्लेबाज आगे बढ़ रहे हैं। 11.88 यानी बिल्कुल 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं। अगर इसी रन गति से गए तो प्रोजेक्टेड स्कोर जो है 338 तक जा सकता है। देखते हैं क्या गेंदबाज, ये उठा दिया है, क्या ये टाइमिंग गलत है, लेकिन बिल्कुल फील्डर के सामने ये गेंद गिरी। तब तक 1 रन, इस रन के जरिए स्कोर में इजाफा होता। स्कोर 191 फॉर 3, 17th ओवर इन प्रोग्रेस। हालांकि डेम्पो चैलेंजर्स के पास भी बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है, बिल्कुल मुकाबला कड़ा होने जा रहा है, कांटे की टक्कर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेम्पो चैलेंजर्स के ये गेंद हल्के हाथ से खेल दिया। हालांकि डेम्पो चैलेंजर्स के जो कोच हैं प्रशांत काकोड़े बिल्कुल नजरें बनाए बैठे हैं स्कोर कार्ड पर। बिल्कुल इस इनिंग के बाद जब बल्लेबाजी के लिए उनके बल्लेबाज जाएंगे तो उनको वो रणनीति है जो बता देंगे, ताकि लक्ष्य बिल्कुल बड़ा होने जा रहा है। पार्थ साहनी 33 के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं, सनवीर सिंह 29 पर। दोनों ही बल्लेबाज कंधे से कंधा मिलाते हुए रनों के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। अथर्व अंकों लेकर बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल डॉट गेंद निकाली है। पार्थ साहनी उनके सामने। ये गेंद कलाई का बेहतरीन उपयोग, गेंद को खेल दिया है फाइन लेग के ऊपर से। ये हवाई यात्रा पे गेंद निकली है 6 रन के लिए। बिल्कुल मौके का फायदा उठाया, गति का फायदा उठाया, गेंद की गति जो थी और सिर्फ दिशा दे दी अपने कलाई के जरिए 6 रन हासिल किए। इस 6 रन के जरिए स्कोर बिल्कुल आगे बढ़ता।
98। और यहाँ पे थर्ड एम्पायर की ओर इशारा किया है टीवी एम्पायर। अब देखने जा रहे हैं कि ये आउट है या नहीं। जब तक बल्लेबाज की दिल की धड़कनें धड़कती रहेगी, जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक गेंदबाज जो है उनका विश्लेषण। साईराज पाटिल 3 ओवर 36 रन दे दिए, 1 सफलता। अथर्व अंकोलेकर अपने निजी चौथी ओवर में चल रहे हैं, 46 रन दिए, कोई सफलता नहीं। अमन खान 2 ओवर में 29 रन दिए, 1 सफलता। लक्ष्य गर्ग 1 ओवर डाली, 19 रन दिए, कोई सफलता उनको नहीं। मनीष काकोड़े बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट हासिल की। रामनाथ गांव का 3 ओवर 32 रन, कोई सफलता नहीं है। तो बिल्कुल इकोनॉमिकल जो चल रहे हैं वो मनीष काकोड़े। यहाँ पे आसानी से प्लेस करते हुए 1 रन ले लिया है। इस रन के जरिए स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर 199 फॉर 3। सत्रह ओवर के समाप्ति के बाद 199 फॉर 3। JSW Cement, start strong, go stronger. World's #1 eco-friendly cement company, JSW Cement। आप जो इश्तेहार है वो देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बढ़िया इंतज़ाम यहाँ पे डगआउट्स में दोनों टीमों के लिए टीवी का इंतज़ाम। उसके अलावा स्कोरर के सामने भी स्क्रीन लगी है। तो लाजवाब इंतज़ाम जो कि गोइची लीग सीजन 24। इसी बीच अमन खान को लाया गया है। तो शुरुआत अमन खान की डॉट गेंद से हुई है। इसी बीच ये गेंद यहां पे उठा दिया है, गेंद बिल्कुल कमेंटेटर बॉक्स के सामने और बाल बाल बचा है। मिरर जो था वरना टूटने की बिल्कुल कगार पर था, नजदीक था। तो यहाँ पे जो मिरर है वो बिल्कुल बच गया है। इस 6 रन के जरिए स्कोर 205। स्कोर बिल्कुल गतिमान होता हुआ, हालांकि यहाँ पे फील्डर के सामने ये गेंद गिरी और 1 रन का इजाफा। स्कोर 206, 206 रन, 18th ओवर इन प्रोग्रेस। ये गेंद फुल टॉस गेंद हवाई फायर कर दिया है, बिल्कुल अग्नि मिसाइल छोड़ दिया 6 रन के लिए काउ कॉर्नर के ऊपर से। इस 6 रन के जरिए स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 212, 212 फॉर 3। गियर तो दोनों बल्लेबाजों ने बदल दिए हैं तेजी के साथ रन बटोरते हुए। जितना लक्ष्य बड़ा होगा उतने जीत के आसार ज्यादा बन सकते हैं। यहाँ पे अपील तो हो चुके हैं लेकिन अंपायर ने नकारा। लेग बाय का इशारा।
स्कोर 113, हालांकि 213, 213 रन 3 विकेट के नुकसान पर पार्थ साहनी और सनवीर सिंह। ये यहां पे मिड विकेट की दिशा में बिल्कुल फील्डर को पाया और एक रन खाते में जुड़ता हुआ। स्कोर 214, 214 आफ्टर 18th ओवर। 18 ओवर के समाप्ति के बाद 214 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जो हमारी सहयोगी हैं HDFC बैंक, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं JSW सीमेंट, इसके अलावा मदिरा सेंटर खूरचरम, इसी बीच जयश्री मल्लिकार्जुन कंस्ट्रक्शन, माताजी मार्केटिंग, ओम साई डिजिटल सर्विस, प्रोपराइटर लक्ष्मण नाइक, इसी बीच मैदान की ओर बढ़ते हैं। ये गेंद यहां पे उठा दिया है, बिल्कुल बढ़िया और बेहतरीन तरीके से अपने आप को पूरी तरह से हवा में झोंकते हुए इस गेंद को रोका साईराज पाटिल जो कि गेंदबाज है। बिल्कुल बाउंड्री लाइन के अंदर इस गेंद को रोका और यकीनन अपने टीम के लिए रन बचा लिए हैं। सनवीर सिंह अब सामना करने के लिए तैयार। 35 के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं सनवीर सिंह। फील्ड में बदलाव करते हुए स्कोर 215, 215। कदमों का इस्तेमाल किया, आ गया है, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया, 1 रन मिलेगा। इस रन के जरिए स्कोर 216, 216। पार्थ साहनी 49 पर खेल रहे हैं, 49 पर। तो क्या ये दूसरी हाफ सेंचुरी प्रथमेश साळुंके के बाद हो जाएगा या नहीं, वो देखना है। दिशा से भटके वाइड बॉल का इशारा, तो इंतजार करना पड़ेगा पार्थ साहनी को अपने हाफ सेंचुरी के लिए। 49 पर खेल रहे हैं, 23 गेंदों का सामना किया। हालांकि प्रथमेश साळुंके 65 रन बनाए, बिल्कुल करारी बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी की थी प्रथमेश साळुंके ने। अब पार्थ साहनी और सनवीर सिंह उसी को दोहरा रहे हैं। यहाँ पे 1 रन तो यकीनन मिलेगा और ये हाफ सेंचुरी इस इनिंग की, ये दूसरी हाफ सेंचुरी सनवीर सिंह के बल्ले से। उन्होंने तालियों का जो अभिनंदन है स्वीकार किया, अपना बल्ला हवा में लहराते हुए। पार्थ साहनी बिल्कुल बढ़िया प्रदर्शन, 5 छक्के उसमें शामिल हैं, 2 चौके। ये गेंद मिड विकेट की दिशा में खेल दिया और 1 रन खाते में जुड़ता हुआ। 219, 219 फॉर 3, 19th ओवर इन प्रोग्रेस। इसके बाद आखिरी ओवर बच जाएगी। 11.73 के रन औसत पर रन आ रहे हैं। यहाँ पे
पॉइंट की दिशा में खेल दिया 1 रन के लिए। इस रन को जोड़ते हुए स्कोर 220, 220 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब तो दोनों बल्लेबाज यकीनन हमलावर रहेंगे क्योंकि ज़्यादा गेंदें नहीं बचे हैं। विकेट 7 विकेट हाथ में है, लेकिन विकेट यहाँ पे मायने नहीं रखता है क्योंकि जितने रन ज़्यादा आएंगे उतने फायदेमंद साबित होंगे। तो देखते हैं साईराज पाटिल की अगली गेंद। ये उठा दिया है, क्या सही टाइमिंग, जी हाँ बिल्कुल स्ट्रेट, तीर के माफिक सीधा खेल दिया साइड स्क्रीन के ऊपर। यह हवाई फायर 6 रन, इस 6 रन के जरिए स्कोर 19 ओवर के समाप्ति के बाद 226। बेहतरीन कैमरा वर्क हमारे कैमरामैन द्वारा, बिल्कुल गेंद का पीछा करते हुए कैमरामैन जूम लेंस से। तो 19 ओवर हो चुके हैं, तो देखना होगा लक्ष्य जो है क्या 240 के पास जाएगा या नहीं। फिलहाल स्कोर 226, तो और 14 रन आते हैं इस ओवर में तो 240 तक जा पाएगा। ये उठा दिया है, ये बिल्कुल बढ़िया, सनवीर सिंह अब अपनी बाहें खोल चुके हैं। बेहतरीन मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से ये गेंद चली गई है। इसे भी गेंद उठाने की कोशिश, पार्थ सानी लगातार पीछे पड़े हैं। अमन खान जो कि गेंदबाज हैं, पिछली गेंद डॉट निकाले हैं, पहली गेंद पर एक करारा छक्का जड़ दिया था। इसी बीच ये उठा दिया है, फिर से गेंद हवा में है और ये कैच, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कैच ले लिया है। लपक लिए गए, लेकिन उन्होंने बेहतरीन काम यहां पे अपने टीम के लिए कर दिया है। प्रायोरिटी टाइटंस के लिए 57 रनों की पारी खेली, 27 गेंदों का सामना किया पार्थ साहनी ने। बिल्कुल बढ़िया अपना योगदान देते हुए पार्थ साहनी प्रथमेश साळुंके के बाद, हालांकि विकास सिंह ने भी बढ़िया योगदान दिया। तो बिल्कुल हर बल्लेबाज जो आता है वो अपना योगदान देकर जाता है। सनवीर सिंह जो कि 43 पर खेल रहे हैं, पार्थ सानी अभी अभी आउट होने वाले बल्लेबाज। नए बल्लेबाज हैं दीपक पुनिया, तो देखते हैं दीपक पुनिया, हालांकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसी बीच देखना है दीपक पुनिया क्या खुद हमलावर होते हैं या आखिरी 2 गेंदें सनवीर सिंह को देते हैं। और ये अपील आउट, हालांकि स्ट्राइक बदल कर सनवीर सिंह को देना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल विकेट के सामने पाए गए और ये लेग बिफोर विकेट। बिल्कुल गति में परिवर्तन था, सीधी गेंद जाके पैड को टकराई और 5वीं विकेट का पतन हो चुका है। गोइची लीग 2025 season 24 organized by Sangem Cricketers, powered by Sri Subhash Faldesai, Social Welfare Minister for Government of Goa.
इसी बीच नए बल्लेबाज स्कोर 232 232 for 5. ये यहाँ पे वाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन। तो अमन खान के लिए तीसरी सफलता व्यक्तिगत, जो कि अपनी निजी चौथी ओवर में चल रहे हैं। अमन खान बिल्कुल सफल गेंदबाज, 3 विकेट अब तक उन्होंने छटकाए हैं। यहाँ पे 1 रन ले लिया है, हालांकि काफी देर तक सनवीर सिंह पहले से आगे दौड़ पड़े थे। वेदांत नायक जो कि बल्लेबाज थे, आखिरकार रन तो ले ही लिया। ये यहाँ पे देखना होगा, गेंद तो फील्डर के पास चली गई, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और दूसरा रन भी पूरा कर दिया। इस 2 रन के जरिए स्कोर 20 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जो है 236 रन। तो जीत के लिए 2372 विन। जब तक दूसरी इनिंग जो है वो आगे बढ़ती है, तब तक हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी जानकारी, क्योंकि उनका सहयोग अहम है। उनके बिना ये टूर्नामेंट जो है, आयोजन जो है वो सफल नहीं हो सकता है। जो स्पॉन्सर्स हैं, डेजर्ट एंड मोर, प्रायोरिटी कंस्ट्रक्शन, नीलेश काबराल एमएलए कुरचरम, राजेश फलदेसाई एमएलए कुंभारजुआ, एचडीएफसी बैंक, दीपक अलाइस, अमरनाथ देसाई, योगेश दलाल, संतोष फलदेसाई, प्रसाद नाइक अलाइस पचू, अभिजीत देसाई, गोवा स्पॉन्ज एंड पावर लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, डीजे फार्म्स, श्रद्धा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, कैरल क्रूज, आशीष करमरकर, मेहर खान, रिजमा ग्रुप, रविराज उपाध्याय, सुदेश सालेलकर और छिमाटेक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर्ड बाय रघुनाथ मोरजकर, प्रोपराइटर मदिरा सेंटर, बेस्ट बैट्समैन स्पॉन्सर्ड बाय दत्तदास भिसे, बेस्ट बॉलर स्पॉन्सर्ड बाय लक्ष्मण @ प्रमोद नाइक, मैन ऑफ द फाइनल स्पॉन्सर्ड बाय गुरुनाथ नाइक, प्रोपराइटर डेगो, winner trophy sponsored by advocate Tushar Kalmarkar in the loving memory of his father late Vinayak D.S. Kalmarkar. Runner-up trophy sponsored by Ankush Gauss in the loving memory of his father late Prakash Gauss. Big thanks to Goa Cricket Association. तो ये जो हमारे स्पॉन्सर्स थे उनको याद करना ये हमारा कर्तव्य, जिनके ज़रिए ये टूर्नामेंट बिल्कुल आयोजन जो है सफल होने जा रहा है।
पहला सेमीफाइनल जो कि प्रायोरिटी टाइटंस और डेम्पो चैलेंजर्स के बीच चल रहा है। जो दर्शक व्यूवर्स जो हैं अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं मोबाइल पर, उनके लिए जानकारी। हालांकि डेम्पो चैलेंजर्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो प्रायोरिटी टाइटंस के सलामी बल्लेबाज प्रथमेश साळुंखे बिल्कुल आते ही टूट पड़े गेंदबाजों पर और उन्होंने 65 रनों की पारी खेली और टीम को एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने में योगदान दिया। हमारे स्पॉन्सरर जो अभी मैंने नाम लिया था, रविराज उपाध्याय, जो कि ऑल द वे फ्रॉम उडुपी से यहाँ आ रहे हैं। सर वेलकम आपका। तो बिल्कुल अभी अभी नाम लिया और नाम लेते ही हमारे सर हमारे बीच आ चुके हैं। तो देखते हैं अब ये पहला सेमीफाइनल जो हो रहा है दोपहर को ठीक 2 बजे, दूसरा सेमीफाइनल ये गोइची लीग का
Welcome back again to the semi-final one of GOICHI League 2025. Match between DEMPO Challengers and Priority Titans. DEMPO Challengers needing a target of 237. That's a big total that has to be chased down in 20 overs. Team winning reaching the finals that will be played tomorrow in the evening. Big prize is to be won. Loads of cash. And certainly, DEMPO will have to bet out their skin. Swing missed. Straight away trying to take on the bowler. Missed it completely. Again, swing and a miss. Dot delivery. Just maybe wanting to utilize the first three power play overs. GOICHI League 2025 brought to you by the SANGUEM cricketers. Nicely played, but gone. Straight to the fielder. And the first casualty of DEMPO Challengers. Trying to go up and over, but straight into the hands of that fielder. Sanveer Singh with that wicket. Deepak Punia taking that catch. And Mr. Tendulkar has to depart without troubling the scorers. He's gone for a duck. It's none for one. DEMPO Challengers. New man in Aman Khan. Lots of responsibility on his shoulders now. As 237 always looked to be a mountain to chase down, it has just gone a touch not higher. Lose a wicket early, and that too in the first over itself. Swing missed. Dot delivery again, trying to feel for the ball outside the off stump. Bowling some good line is Sanveer Singh. Presenting full face. Seam position, perfect. Ball just moving away from the right-hander. Previously, when Tendulkar tried to hit it, hit the toe end of the bat, that one came into him as the natural swing of the right-hander, right armour. Nicely played. That's a pickup. And pick up onto the advertising hoarding.
for a maximum. Just a check drive using the pace of the bowler. Onto leg stump and helped along nicely by Aman Khan. Gets off the mark with the maximum. Nicely played. Solid block to get a single. After completion of one, it's 7. 7 for 1 after 1 in pursuit of 237. DEMPO challenges. From the Pepsi end, Deepak Punia has been given that new cherry. First over, 7 for 1. Wicket of Tendulkar in the very first over. And then Aman Khan blasting one out of the park over mid-wicket fence for a maximum. And a single happened also on that last delivery. 7 for the loss of 1 after 1. Requiring another 230. 230. Still, someone needs to play a special innings. Just like how Prathamesh Sarunke started off and then equally well supported by Sanveer Singh and Vikas Singh at the end. Late fireworks provided by them. Meanwhile, here's Deepak Punia. Nicely played. Again, a check. And that has been timed beautifully. Is he going to come back for the second? No. Just settling for one. Maybe these two batsmen would have been slow off the blocks. Swing missed. Appealing. Deepak Punia pleading to the official. Oh, toe end leading edge. Will just be one. Survives the scare. Does Piyush Yadav. Gets off the mark with that single, does Piyush. Very lucky to get away with that. Nicely bowled again. Just darting back in. Quick look at all the sponsors for this tournament. For this GOICHI League 2025 organized by the SANGUEM cricketers. Powered by Shri Subhash Vardesai, Minister for Social Welfare. A big thank you to Goa Cricket Association and all the office bearers. Nicely played. Straight to the field again. Will be dot delivery. Talking about the other sponsors, Desert and More, Priority Constructions, Nilesh Cabral, MLA Kurcherem, Rajesh Fardesai, MLA Kumbarzua,
HDFC Bank, Deepak, aka Amarnath Desai, Yogesh Dalal, Santosh Desai, Prasad Naik, aka Pochu. Nicely played again. Will be a single. Very good over coming to an end. Just the 2 from it, in fact 3 from it after completion of 2. It's 10. 10 for 1 after 2. Goa Sponge and Power Limited, JSW Cement, DJ Farms, Shraddha Ispet Private Limited, Queres Cruise, Ashish Karmalkar, Meher Khan from the Rizma Group, Ravi Raja Upadhyay, Sudesh Salelkar, and Chaimatech Projects Private Limited. Best Batsman sponsored by Shri Dattadas Bise. Best Bowler sponsored by Shri Lakshman, aka Pramod Naik. Man of the Final sponsored by Gurunath Naik. Again lifted and again being launched over the mid-wicket fielder for a maximum. Just using the pace of the bowler. Well, you can see Aman Khan, long, big stride, tall man. And just check over mid-wicket fence, it perishes for a maximum. Man of the final sponsored by Gurunath Naik, proprietor, Dago Enterprises. Man of the series sponsored by Raghunath Moraskar, proprietor, Madira Center. Winners Trophy sponsored by Advocate Tushar Karmalkar in the loving memory of his father late Vinayak D.S. Karmalkar. Runners-up trophy by Mr. Ankush Gawas. Again looking to go over the top. This time missed. Mr. Ankush Gawas in the loving memory of his father late Prakash Gawas. A big thank you to all the sponsors for their invaluable support for the Goichi League 2025. Nicely played again. Straight to the fielder. Finding the mid of the blade. Just that need to find some gaps. Aman Khan. (16 for 1). Asking rate at the start was well and over the 13 kind of mark, 13-12 kind of mark. Flown away over the man at short third. Fortune favoring the brave. Again a short delivery, trying to play it over mid-wicket. Thickish outside edge and over the third man fielder. It got flown away. Another boundary. Score moves to 20. Third over in progress, and certainly Sanveer Singh has been taken to cleaners right now. First over, 7 runs, now 10. First free hit has been taken. This time in the gap. Fielder, too much work for him. And does well on the boundary rope. Will be a couple. Score moves to 22.
Up in the air. Fielder trying to get underneath. And taken easily. That's a sock dismissal. Haman Khan was looking so good up until that point where he just lobbed it in the air. And Sanveer Singh has the final laugh. He has picked up 2. It's 22 for 2. New man in Atharva Ankulekar. 22 for 2. After 3. Sight looks a bit ragged right now of the DEMPO challenges. Chasing a mammoth total of 237. Need a solid foundation, but have lost 2 wickets. Haman Khan looking so good and just skying one up and taken in the end. Change in bowling from the Pepsi end. It will be Vikas Singh. Batted really well today. Vikas Singh. Now opportunity with the ball. 22 for 2. 3 overs done and dusted. Nicely played. Leg glanced. Straight to the field at back to the square. Will just be 1. Quick delivery. Nicely guided. And that will be just a single. Score moves to 24. Absolutely need a work cut out. The DEMPO challenges chasing 237 in the semi-final one. No more chances, only the semi-final. If you win, you go into the finals. If not, you're packing everything and going home. Looking for a single but denied by the non-striker. Rightly so. Don't want to take any risk at this stage. Need a partnership, and that partnership need to prosper as the game progresses. Swing, miss. That one just bowl a bit quicker. Skid across nicely by Vikas Singh. Short delivery.
and tonked away. Long, long way for a half a dozen runs. Up until that point, was bowling really good. Was trying to just fire it in. This one, shorter, slower through the air, and rocking back on the back foot. Piyush Yadav has smoked that one over the cow corner for a 6. Score moves to 30 with that 6. Still one delivery remaining in this Vikas Singh over. Again played down to the cow corner fielder. We'll just have to settle for 1. 4 overs. After completion of 4, it's 31 for 2. 31 for 2 after 4 overs. DEMPO challenges. Change in bowling. It will be Amit Yadav from the gateway end. 31 for 2 after 4 overs. Looks like we'll be coming from round the stumps. Cut away. Straight to the field at back to the point. Maybe a dot delivery. Saif Ali Karasgi. The field at back to the point. Again, good delivery this time. Touch slower. A lot of revelations on the ball from Amit Yadav. Loads of experience. And has been a premier all-rounder in the Goan cricketing circuit. Nicely played, straight to the man. Again, at cow corner. Will be another single. Won't mind these kind of singles or doubles. The priority Titans at this stage, just the boundaries and the maximums might just keep them thinking. But currently, well within the grasp of that big victory over DEMPO challengers. Priority Titans are certainly eyeing for that final spot. Oh, that one just turned a bit. Moved away. Good delivery. Coming diagonally again. Another time beaten. Excellent delivery. Well, the supporters and the coaching staff of Priority Titans looks very happy. Especially Mukhtar Qadri bhai with that performance of the batters especially. And now the bowlers backing it up. Oh, drop. Chance gone begging. Very close, tantalizingly close. Well, certainly we'll have a look on the replay. What happened there?
Piyush Yadav just tried to push that one through the covers, and really good effort from that fielder. Just couldn't quite hold on to it. 5 overs completed. After completion of 5, it's 33 for 2. DEMPO challenges. Will be change in voice. It will be Banti Udelkar sir in the commentary box. इसी बीच गेंद आते ही उठा दिया है, हालांकि कमेंटेटर बॉक्स में बदला हुआ था और ये हवाई फायर कर दिया है। बिल्कुल 6 रन अपने खाते में जुड़ चुके हैं। पीयूष यादव और अथर्व अंकोलेकर। इससे पहले मेरे साथ कमेंटेटर बॉक्स में श्याम कलंगुटकर जो कि अंग्रेजी समालोचक, और यहाँ पे फ्री हिट ले ली गई है। विकास सिंह जो कि गेंदबाज है। ये दूसरी ही फ्री हिट थी, हालांकि सिर्फ 1 रन और थोड़ी सी मिस फील्डिंग के जरिए दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए दूसरा रन चुरा लिया। इस 2 रन के जरिए स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर 41 रन पर जा पहुंचा है। 41 for 2। अथर्व अंकोलेकर और पीयूष, ये खेल दिया है काव कॉर्नर की दिशा में। बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग वहां पे। 1 रन ले लिया, दूसरा रन लेने की कोशिश देखना होगा वहां पे। बिल्कुल बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ ये दूसरा रन ले लिया है। इस 2 रन के जरिए स्कोर में इजाफा हो चुका है। अथर्व अंकोलेकर खेल रहे हैं 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर, पीयूष यादव खेल रहे हैं 10 के व्यक्तिगत स्कोर पर। विकास सिंह हालांकि फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, जो कि पेप्सी एंड से। 43 for 2 हो चुका है। 6 ओवर इन प्रोग्रेस। ये यहाँ पे फील्डर को बीट किया, गेंद यकीनन बाउंड्री लाइन के पार चली जाएगी। मौके पे चौका, उस चौके के जरिए स्कोर में फिर एक बार तेजी से इजाफा होता हुआ गति पकड़ी है। स्कोर गतिमान होता हुआ जा रहा है, आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। 47 for 2। अथर्व अंकोलेकर बिल्कुल मौके का फायदा उठाया, मौका मिला, चौका पाया। क्या फिर से हमला बोल दिया? जी हाँ, हमला तो बोल दिया। और इस बार ये गेंद हवाई यात्रा पे निकले हैं। 6 रन के लिए करारा छक्का जड़ दिया। ये गोइची लीग 6। इस 6 रन के साथ स्कोर में फिर एक बार बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा है 53 रनों पर। 53 for 2। बिल्कुल अब एक्सीलेटर पर पावर रखते हुए, हालांकि उनको रखना ही पड़ेगा क्योंकि लक्ष्य जो है काफ़ी बड़ा है, तो जो रन औसत हैं उसे बरकरार रखना पड़ेगा। इसी बीच 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 53 for 2। तो बिल्कुल देखना है क्या डेम्पो चैलेंजर्स जो कि चैलेंज रखा है 237 का जो चैलेंज रखा है डेम्पो चैलेंज के सामने प्रायोरिटी टाइटंस ने, क्या उसको हासिल कर पाएंगे? हालांकि बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है डेम्पो चैलेंजर्स के सामने, साझेदारी बनानी पड़ेगी। अमित यादव की ये गेंद आगे आकर उठाने की कोशिश और कीपर ने काम तमाम कर दिया है। तीसरा धक्का यहाँ पे, ये जोर का
झटका लगा है, जोर से लगा है। अमित यादव के लिए ये सफलता, बिल्कुल मौका बना लिया था अमित यादव ने और कीपर ने बेहतरीन साथ निभाते हुए अमित यादव का ये विकेट हासिल करने में मदद की है। तो इसी बीच जो दर्शक व्यूअर्स जो हैं अभी भी जुड़े हैं उनके लिए जानकारी है, इसका सीधा प्रसारण जो आप YouTube के जरिए देख रहे हैं, गोवा लाइव कास्ट गोइची लीग, जो कि गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान में यानी कोटराली मैदान में ये चल रहा है। बिल्कुल बढ़िया मैदान, हालांकि हवा बिल्कुल नहीं है इस मैदान पर, बादल हालांकि छाए हुए हैं लेकिन बारिश के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और आना ही नहीं है, क्योंकि 100% बारिश नहीं आने वाली है। तो इसी बीच स्कोर जो है 53-3, ये पहला सेमीफाइनल मैच चल रहा है। देखते हैं कौन सी टीम फाइनल में जाएगी, क्या वो डेम्पो चैलेंजर्स या प्रायोरिटी टाइटंस। हालांकि प्रायोरिटी टाइटंस ने बिल्कुल इस मैच पर अपना दबदबा कायम रखा है, क्या वो पासा पलट देंगे साइराज पाटिल और अथर्व अंक को लेकर। ये यहाँ पे एक ही रन मिलेगा, इस रन को जोड़ते हुए स्कोर 54 रन पर जा पहुंचा है। शाम को दूसरा सेमीफाइनल मैच होने जा रहा है, डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स और PIOC के बीच। कलाई के जरिए मोड़ दिया है 1 रन के लिए। मुख्तियार कादरी अपने प्रायोरिटी टाइटंस के जो बल्लेबाजी थी उस पर काफ़ी खुश हैं, एक बड़ा लक्ष्य उन्होंने तय किया है। इसी बीच कलाई का उपयोग और कप्तान शेर बहादुर यादव भी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, बिल्कुल अपने गेंदबाज को समझाते हुए कि कैसे फील्ड कहाँ सजी है उसके मुताबिक गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पे, ये गेंद हवाई यात्रा के लिए निकली है 6 रन के लिए। ये लगा गोइची लीग 6। ऐसे ही शॉट खेलने होंगे, साझेदारी बनानी पड़ेगी, तो ही डेम्पो चैलेंजर्स जो उनके लिए चैलेंज रखा गया है उसको हासिल कर सकते हैं। ये गेंद, क्या ये लगातार दूसरा छक्का हो सकता है? जी हाँ, सीधे डगआउट्स में ये गेंद हवाई फायर होता हुआ लगातार दूसरी बार गियर बदल दिए हैं अथर्व अंकों लेकर, बिल्कुल मौका देखते ही छक्का पा लेते हैं। स्कोर जा पहुंचा है
68 फॉर 3। 7 ओवर के समाप्ति के बाद 7 ओवर हो चुके हैं। 68 तो रन औसत जो है 9.71 और आस्किंग रन रेट है 13 रन। अगर ये आस्किंग रन जो है वो हर ओवर में आते हैं तो बिल्कुल इस मैच में बने रहेंगे डेम्पो चैलेंजर्स। फिलहाल तो 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन आ रहे हैं। विकेट बचाकर रखने होंगे और हमला भी बोलना होगा, क्योंकि अगर रन ओवर में कम आते हैं इसी बीच फ्री हिट। पार्थ सहानी को लाया गया है पेप्सी एंड से। ये उठा दिया है, कदमों का इस्तेमाल किया, आ गया है, लेकिन टाइमिंग उतना नहीं था और ये बिल्कुल चौथी विकेट का पतन हो चुका है। पार्थ सहानी जिन्होंने ये शिकार किया। इसी बीच थोड़ी सी पानी की मांग, क्योंकि बल्लेबाज नए बल्लेबाज आएंगे तब तक जो वक्त है मिलेगा। इस जो टूर्नामेंट का आयोजन है गोइची लीग 24th एडिशन, जो कि सांगेम क्रिकेटर्स ने आयोजन किया है, एक बढ़िया आयोजन। हालांकि दोनों डगआउट्स में खिलाड़ियों के लिए टीवी की व्यवस्था, इसके अलावा कूलर भी लगे हुए हैं, फ्रिज भी है, क्योंकि ठंडा पानी जो खिलाड़ियों के चाहिए। कमेंटेटर के सामने स्क्रीन, टीवी स्क्रीन है। डिजिटल स्कोर में गजा मसूरकर, इसके अलावा स्कोर बुक पर है विवेक। मैच रेफरी है विवेक कोलमकर और मैदान पर पुण्य पालकर। और गांवकर जो कि जीसीए मान्यता प्राप्त अंपायर्स फील्ड में तब्दीली करते हुए। ये गेंद यहाँ पे झट से स्टंप उखाड़ दिया और ये आउट। यहाँ पे पारी जो है वो बिल्कुल लड़खड़ा रही है और एक विकेट का पतन हो चुका है। बिल्कुल मुश्किल में है डेम्पो चैलेंजर्स। इस मुश्किल से उनको उबरना होगा, एक बड़ी साझेदारी करनी होगी। तो हर एक शिकार बिल्कुल बढ़िया तरीके से कीपर ने पलक झपकते ही स्टंप बिखेर दिए और बल्लेबाज को क्रीज के बाहर पाया। अंपायर ने बिना देर किए आउट करार दे दिया है। तो बिल्कुल इस मैच में अपना कब्जा बनाते हुए प्रायोरिटी टाइटंस, आप रिप्ले में बिल्कुल देख पाएंगे कि बल्लेबाज को कोई मौका नहीं था, इतने तेजी के साथ कीपर ने स्टंप बिखेर दिया। तो मैं कह रहा था कि सांगेम क्रिकेटर्स ने इसका आयोजन किया है, जो कि प्रेसिडेंट है तुषार करमरकर और सेक्रेटरी अमरीश मराठी, इसके अलावा नारायण मसूरकर जो कि ट्रेजरर हैं, बिल्कुल अपने साथी मेंबर्स के साथ इस टूर्नामेंट का बढ़िया आयोजन हो रहा है। और ये टूर्नामेंट जो कि पावर्ड बाय सुभाष फल देसाई
Social Welfare Minister, Government of Goa. इसी बीच फ्री हिट ले ली गई है, तो देखते हैं इस फ्री हिट पर कितना फायदा उठा पाते हैं। ये गेंद देखना होगा क्या, हालांकि सिर्फ 1 रन मिलेगा इस फ्री हिट पर। गोइची लीग आज ये यहाँ पे अपने फॉलो थ्रू में हालांकि रोकने की कोशिश की, मौका बना था, लेकिन गेंद तेजी के साथ गेंदबाज की ओर आ रही थी और 1 रन। शाम को 2 बजे यानी दोपहर को 2 बजे दूसरा सेमीफाइनल, और कल फाइनल मैच ठीक 1:30 बजे होने जा रहा है। यहाँ पे कलाई का उपयोग इस रन को जोड़ते हुए स्कोर 71 रन 71, तो बिल्कुल दबाव बना लिया है प्रायोरिटी टाइटंस। हर मौके का फायदा उनके गेंदबाज ने उठाया। छह विकेट का करारा नुकसान उठाना पड़ा है और स्कोर 71 रन 71। तो देखते हैं अब अगले गेंदबाज अमित यादव, फील्ड में तब्दीली करते हुए अमित यादव। बिल्कुल सभी गेंदबाज जो है प्रायोरिटी टाइटंस के बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। यहाँ पे और 1 रन का इजाफा होता और इक्के दुक्के से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है प्रायोरिटी टाइटंस को। और 1 रन खाते में जुड़ता हुआ स्कोर 72, 72 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ये उठा दिया है, जहां पे कोई भी फील्डर नहीं था उसी दिशा में खेल दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, जो कि कवर बाउंड्री लाइन के बाहर ये गेंद चली गई है चौके के जरिए। 76 रन, जो लक्ष्य है काफी दूर है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऐसे ही लंबे और करारे चौके, लंबे छक्के खेलने पड़ेंगे। 76 रन पर स्कोर जा पहुंचा है। ये यहां पे बहुत ही बेहतरीन हवाई फायर कर दिया है, बिल्कुल 6 रन के लिए स्कोर बाउंड्री लाइन के पार चली गई है। 84, 84, 82, हालांकि 82, 82 रन। बयासी रन हो चुके हैं। अमित यादव फिर से तैयार। ये गेंद उठा दिया है, लेकिन इस बार टाइमिंग गलत। देखना होगा फील्डर पहुंचते नहीं, काफी
ऊंचाई हासिल की थी, हवा से बातें करते हुए गेंद नीचे आ रही है, लेकिन फील्डर से काफी दूर। विकास सिंह प्रयास बढ़िया किया था, पहुंच नहीं पाए। बिल्कुल शेर बहादुर यादव, चीता जिनको कहते हैं, पूरी तरह से इस मैच पर निगाहें बना बैठे हैं बढ़िया कप्तानी के साथ। अमित यादव की अगली गेंद, डॉट गेंद निकाली है। एटी 83 रन। यहाँ पे फिर एक बार डॉट गेंद, तो स्कोर जो है 83 फॉर 6। 8 ओवर के समाप्ति के बाद 83 फॉर 6। 8 ओवर के समाप्ति के बाद 83। जीत का लक्ष्य काफी दूर है, तो उस लक्ष्य तक जाने के लिए बिल्कुल विकेट बचाकर धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी। मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है 1 रन के लिए। इस रन के जरिए स्कोर 84, 84 रन। यहाँ पे और 1 रन, इस रन को जोड़ते हुए स्कोर 85। इसी बीच गेंद, ये गेंद यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी। पार्थ साहानी बांध के रखा है बल्लेबाज को। ये फुल टॉस गेंद, देखना होगा, फील्डर को क्लियर करती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई है। काव कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। इस 6 रन के साथ स्कोर 91। अथर्व अंकों लेकर 54 रन पर जा पहुंचे, और इसी बीच एक फिर से उठा दिया है 6 रन के लिए। बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी अथर्व अंकों लेकर। तेजी से पारी खेलते हुए 60 पर जा पहुंचे। 60, 21 गेंदों का सामना किया। उनको एक छोर से डटे रहना है, बिल्कुल हमलावर होना है, और वही काम कर रहे हैं अथर्व अंकों लेकर। 60 रन अब तक बना चुके हैं, 21 गेंदों का सामना किया। दस ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर, हालांकि कमेंट्री बॉक्स में बदलाव। श्याम कलंगटकर आगे का आंखों देखा हाल अंग्रेजी में सुनाने के लिए।
Thank you, Bunty Bhai. Amit Yadav will continue. And that will just be a single. Remember something special by Amit Yadav few years back. 230, 40 odd they were chasing in Porvorim. And Amit Yadav stood his ground till the very last and then got the total. Can Atharva Ankolekar do the similar kind of thing? Swing missed. Trying to take him on. Completely missed. Currently 98 for the loss of 5 wickets. Shimmy down the wicket. This time it's miscued. Fielder coming in. Oh, can't get there. Came in from the extra cover region. And in that process might have hurt himself. Maybe got something on his webbing. And with that, 100 up for DEMPO. High in the air, miscued it completely. Trying to go over the top, over mid-wicket. And skying it into the extra cover region. Atharva survives. Batting on 62 of 24. This time edged straight to Basu. And will be a single. A special innings this from Atharva. Battling it out. Lone man standing. Rajsekhar Harikant has joined him. A skipper. Another 10 overs. Another 9 overs from here on. Asking rate of 14.57. Gettable, you never know. These two are power hitters. 1 or 2 big overs can certainly get them back in this game. Just that belief has to be there. .136 in 56 deliveries. This time, shot and hammered. Has it gone all the way? Yes, it has. A maximum coming from the bat of the skipper. Standing tall in his crease and just playing it over the vacant bit of region between the long on and the mid wicket into cow corner region. Score moves to 107, requiring another 130. This time up and over covers. On the bounce and overran that one. Saif Ali Karazgi just trying to get behind it. And might have not read the spin on that one. And that's 4. Amit Yadav doesn't look happy. And why wouldn't he be? Score moves to 111. 111 for 5. And this being the golden over now. 111 for the loss of 5 wickets. Quick look at all the sponsors for this tournament. GOICHI League 2025, powered by Shri Subhash Desai, Minister for Social Welfare. Sponsors the Desert and More, Priority Constructions, Nilesh Cabral, MLA, Kuchurim, Rajesh Desai, MLA, Kumbarzua, HDFC Bank, Deepak, aka Amarnath Desai, Yogesh Dalal, Santosh Desai, Prasad Naik, Pochu, Abhijit Desai, Goa Sponge and Private Limited,
JSW Cement, DJ Farms, Shraddha Ispet Private Limited, Queres Cruz, Ashish Karmalkar, Meher Khan, Rizma Group, Raviraj Upadhyaya, Sudesh Salelkar, Chima Tech Projects Private Limited. A big thank you to Goa Cricket Association as well and the office bearers for their valuable support. Deepak Punia straight away in the air. That's a sky, a steepler, and that has been taken. It went miles up in the air. And Atharva Ankulekar, after playing a brilliant knock of 63, has to depart. So it's a fair delivery. And that will be out. That's a big wicket. Sanveer Singh taking that catch. That went miles up. And a beautiful catch to end a classy innings. Squashbuckling innings of Atharva Ankulekar. 111 for 6. Deepak Punia providing that breakthrough. New man in Rahul Mehta. Nicely played in the covers. But straight to the man coming in from the boundary rope. Will get to the mark with that single. Rahul Mehta. This being the golden over. Wicket at the first, now a single. This is the speciality of Sangam cricketers. Just to attract more crowd, more people to the game. They've introduced this golden over. Nicely played along the carpet. Will just be one. Deepak Punia trying to bowl to his field and so far has been successful. Nicely played.
Stand and deliver. And that's 4. Coming down the wicket. And nicely played through the covers for 4. Just bowled it wide, away from the reach, but equally to the task was Rahul Mehta. Outside edge, and oh, what a catch that is! An absolute specky. Wow. One-handed grab. And it's Deep, who has again lit up the occasion. Into the position quickly, diving towards his right side. A remarkable catch. Here's a look at the replay provided to you by Goa Livecast. Outside edge, a top edge, and man at short third, Deep. Airborne and taking a wonderful catch to dismiss Rahul Mehta. 7 wickets down for the DEMPO challengers. New man in Manish Kakode. A few months back, I was privileged to do commentary of Manish Kakode's batting in Porvorim in that exhibition game of Advocates, where he batted well, scored 70-odd runs, double quick time. Needs that kind of innings now. Good delivery, outside edge, straight to the fielder, and will pick up a single. Get to the mark with that single. Score moves to, after the completion of 12, so score will move on to 125. 125 for 7 after 12 overs. Nicely cut away. Saif Ali Karazgi. This time makes no mistake. It'll just be 1. Oh, excellent delivery. Has he done him? He looks surprised. Oh, is he gone? Yes, he is. He is being castled. The skipper has been done in for an absolute chaffer of a delivery. Pitched on leg stump, and the off stump was knocked over. Parth with that magical off spinner to dismiss the skipper of the opposition side. Rajsekhar Harikant had no clue whatsoever. No matter just Rajsekhar Harikant, any batsman would have been clueless on that one.
It's 126 for 8. Dempo challengers staring down the barrel at the moment. Nicely played. Sarthak Beke gets off the mark with that single. Appealing. And the third umpire has been referred to. TV umpire to director, we have a review for a stumping. I checked the delivery, it's a fair delivery. You can move on to spin vision. Has he grounded his feet properly? Is he inside the popping crease? We'll have a look. The third umpire will definitely intervene shortly. Give us the verdict. And that's out. Red signal. Feet was not grounding inside that popping crease. Manish Kakode has to depart. Excellent glove work by the wicketkeeper. So 9 down now. 427. So last man in, Ramnath Gaokar. To bat out plenty of overs. Another 7 overs remaining. And this being the last man coming out to bat. Parth Sahani has been pick of the bowlers. 4 wickets to him so far. Into his third over. Nicely played. Will be a dot delivery. To achieve that 5, the skipper has put in an extra slip. 2 slips have been placed. Down the ground. And that will be a maximum. Gets off the mark with the 6. Does Ramnath Gaokar. After completion of 13, it's 133 for 9. 133 for the loss of 9 wickets. Dempo challenges. Well, look who it is. The skipper. Sher Bahadur Yadav. Wants to try his arm over. Will be bowling from the Pepsi end. 133 for 9. In search of that last wicket, priority Titans. Nicely played. And that will just be a single. Oh, good delivery. Taking it away. Dot delivery. Shimmy down the wicket.
And down the ground to the fielder. Deepak Punia. Will just be one. Again, using his feet. Will be another single. It started off in a blistering fashion for the Priority Titans with those runs, and now commanding position with the ball. That's big. And it's out of here. A maximum. Completion of the 14th over. It's 143 for 9. Sarthak Bike this time. Up and over the extra cover. In fact, over the long offside for 6. Well, perfect bit of a semi-final this. And the owner of Priority Titans has announced each player 5,000 rupees, an extra 5,000 rupees for each and every player for reaching the finals. So lots of accolades coming their way. And why wouldn't be? Owner looks very happy, so the coaching staff. Signal comes from the umpire for the batting power play. And Basuraj Madar has been given the ball from the gateway end. Talking about that prize money. In fact, prize money is substantial as far as GOICHI League is concerned. Organized by the SANGUEM cricketers. Meanwhile, a special kind of reckoning by the owner of Priority Titans. 5,000 each, an extra bit of a kitty to all the players. Nicely played, nicely behind it. Ramnath Gaonkar, dot delivery. This time off the back foot, down the ground will just be one. In search of that last wicket, the Priority Titans. As far as the batting of DEMPO was concerned, apart from Atharva Ankolekar and Aman Khan at the start, nobody really get going. And that's been smashed, and smashed for a maximum. Half a dozen runs. And with that, 150 up for DEMPO challengers. Down the ground, off the back foot for a 6. Oh, that one was quick. Came in sharply. Very well behind it though. Very lucky. Sarthak Bike to get something on it. Again, out of here. This time it's a boundary. Down on one knee and over the fence for a couple of bounces. Score moves to 154. Some late fireworks that have been provided by these two batsmen for the last wicket. Ramnath Gaonkar and Sarthak Bike. Nicely played with soft hands. Chance of run out, not quite.
Single to end the over after 15. It's 155 for 9. 155 for 9 after 15 overs. Will be change in voice. It will be Hudelkar sir in the commentary box. धन्यवाद श्याम कलंगुटकर जो कि अंग्रेजी कमेंटेटर, अंग्रेजी समालोचक, के आखिरी विकेट मैदान पर है। रामनाथ गांवकर और सार्थक विके ये दो बल्लेबाज मैदान पर बने हैं। इसे भेजिए गेंद। वाइड बॉल का इशारा, एक रन अतिरिक्त। 156 for 9। तीस गेंदें बची हैं, 81 रन चाहिए। मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, कोशिश जारी रखनी चाहिए। और एक रन खाते में जुड़ता हुआ। 157 रन। सोलह रन के ऊपर आस्किंग रन रेट जा चुका है। फिर एक बार दिशा से भटके वाइड बॉल का इशारा। तो अगर 16 रन प्रति ओवर बनाते हैं तो ही ये मुमकिन होगा। हर ओवर में 16-17 रन आपको हर हालत में विकेट बचाकर बनाने होंगे। दीपक पुनिया जो कि दूर वाले छोर से यानी पेप्सी एंड से। पॉइंट की दिशा में खेल दिया, एक रन। और इक्के दुक्के से प्रायोरिटी टाइटंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको मालूम है जैसे जैसे इक्का दुक्का या डॉट गेंद आती है तो आस्किंग रन रेट जो है वो बढ़ती ही जाएगी। ये गेंद कड़ा प्रहार किया, कवर बाउंड्री लाइन के पार गेंद चली गई है, हवाई फायर कर दिया है 6 रन के लिए। तो ऐसे ही शॉट अगर आते हैं तो ही आशाएं डेम्पो चैलेंजर्स की बन सकती हैं। बिल्कुल आशाएं नहीं छोड़ रहे हैं, हौसले बुलंद हैं और उसी दिशा की ओर बढ़ते हुए सार्थक और रामनाथ। ये गेंद यहाँ पे और एक रन का इजाफा होता हुआ। इस रन के जरिए 166 for 9। आखिरी विकेट के लिए बिल्कुल साझेदारी जो है वो अंतिम गेंद तक टिकी रही। और इस बार फिर से उठा दिया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर गेंद जा रही है, होड़ लगी है गेंद और फील्डर के बीच। देखना होगा आखिरकार शायद फील्डर ने हरा दिया है गेंद को, बाउंड्री लाइन के अंदर इस गेंद को रोका। बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग। और ये नो बॉल का इशारा, तो फ्री हिट भी मिलेगी। तो मौका यहाँ पे बन चुका है
क्या ये पासा पलट देंगे डेम्पो चैलेंजर्स? बिल्कुल, ये आखिरी विकेट, साझेदारी बेहतरीन होती हुई। इस गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, एक ही रन मिलेगा, हालांकि फ्री हिट जरूर थी। स्कोर 170 रन पर जा पहुंचा, 170 फॉर 9। यहां पे गति में परिवर्तन किया था, तो 16 ओवर के समाप्ति के बाद 170 फॉर 9, जीत के लिए 237 रन चाहिए। तो बिल्कुल बढ़िया साझेदारी हो रही है आखिरी विकेट के लिए, आखिर तक टिकनी चाहिए। जो रन औसत है वो उसे बरकरार रखते हुए अगर चलते हैं तो बिल्कुल जीत संभव हो सकती है। आनंद तेंदुलकर जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया, कोई रन नहीं बनाया। पीयूष यादव 11 गेंदों में 10 रन बनाए। इसके बाद अमन खान 13 गेंदों का सामना करते 21 रन बनाए। अथर्व अंक को लेकर बेहतरीन पारी खेली, कर्मों का इस्तेमाल किया, आ गया है, देखना होगा, एक ही रन मिलेगा। अथर्व अंक को लेकर 26 गेंदों का सामना करते हुए 63 रन बनाए, 7 लंबे करारे छक्के जड़ दिए, 2 चौके उन्होंने जड़ दिए हैं। यहाँ पे घुमाकर उठाने की कोशिश की, गेंद और बल्ले का मिलाप नहीं पाया, गेंद को वापस कर दिया गेंदबाज के पास। आखिरी विकेट मैदान पर है, बिल्कुल प्रयास उनके जारी हैं, कोशिश उनकी जारी है। और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो देखते हैं ये आखिरी विकेट, जो कि दोनों बल्लेबाज सार्थक और रामनाथ, इनकी कोशिश क्या कहाँ तक रंग लाती है। सार्थक जो कि 11 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन पर खेल रहे हैं, रामनाथ 10 गेंदों का सामना करते हुए 13 रन पर खेल रहे हैं। तो यहाँ पे तो इसी के साथ जो फाइनल में प्रवेश करने वाली टीम जो है वो प्रायोरिटी टाइटंस, और प्रायोरिटी टाइटंस के ओनर हैं, उनको बिल्कुल खुशी हुई है, और खुशी जाहिर करते हुए हर खिलाड़ी को प्रायोरिटी टाइटंस के 5,000 अतिरिक्त उन्होंने बिल्कुल जाहिर कर दिए हैं। फाइनल में पहुंचने वाली जो कि पहली टीम प्रायोरिटी टाइटंस, कुछ ही पलों में प्लेयर ऑफ द मैच दिया जाएगा। और कैरी ऑन, तो शाम कलंगुटकर ये प्लेयर ऑफ द मैच का किताब देखेंगे किसके लिए जाता है। ओवर टू शाम कलंगुटकर।
Shortly we'll have the presentation ceremony. Requesting both the captains to please come and have a quick word with me. Hello. Both the captains, we can have a quick word with them. Well, Raj, 237 looked to be a very stiff total. What was the approach like in the middle to chase down that total, especially the kind of batting that you have? I mean, to start off on this wicket, we won the toss. We elected to bowl first. 235 on this wicket was never on. I mean, we bowled very badly and we fielded equally badly. I mean, 2-3 drop catches, and then the momentum did not come back to us in the match. Yes, sending Aman Khan at the start, if he and Hankolekar would have batted together, would have been a different story. What do you think about that? Yeah, I mean, chasing 235 is always tough, you know. Again, coming back to what I said before, had we taken our chances, we dropped 2-3 chances, and the momentum in the first 6 overs was completely taken away from us. And then had we taken those catches, I don't think we would be chasing anything more than 180. Certainly, one thing, as you are bowing out of this tournament, one thing about the organizing, there's this being the second edition of GOICHI League. How has been the experience so far? Great. I mean, I have no words to describe the effort what Tushar and all the organizing committee puts in. I mean, I said this last year also. We lost finals last year. This is one of the best tournaments we play. I mean, throughout the season, and we all look forward for this tournament. I mean, sadly, we ended on a losing note, and our journey today comes to an end. All the best for the future tournaments. And thank you. That was the skipper of DEMPO. Next up, I would also like to ask the skipper of Priority Titans, Sher Bahadur Yadav, if he can please come and have a quick chat. शेरू, जीत गए गेम. ओनर ने 5000 सबके लिए अनाउंस भी कर दिए हैं. वो तो अच्छी बात है ही. 236 रन बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा टोटल आपने सेट किया, क्योंकि उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. क्या चल रहा था मन में? जैसे कि पहले ही प्रथमेश ने दिखा दिया कि इंटेंशंस प्रीटी क्लियर थे कि हम आए हैं यहाँ जीतने. टॉस तो मैटर नहीं करता, दैट इज़ अ पार्ट एंड ऑफ द गेम. एक्चुअली प्रथमेश को हम लोगों ने फ्री हैंड दिया है, आपका गेम हो, विकेट मत देखना, आपको जैसे खेलना है खेलो. तो वो अपना गेम पहले मैच से जैसा खेल रहा है वैसे ही खेल रहा है. तो हम लोग का इतना ही प्लान था, हमने पहले भी बोला था कि 20 ओवर खेलना है, तो हम लोग वो एग्जीक्यूट किया और इम्प्लीमेंट किए. मुख्तार भाई का भी बहुत ही बड़ा क्रूशियल पार्ट रहता है इस टीम के साथ, क्योंकि वो एक इंजन रूम की तरह आपके साथ डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं. बाकी का परफॉर्मेंस, 5 विकेट लिए हैं, 50 रन भी मारे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
मुख्तार भाई का हमेशा से उनका ही टीम है, वो हमारे मेंटर भी हैं और सब ओनर भी हैं, तो उनका हमेशा फर्स्ट मैच से ही हमारे साथ सपोर्ट है। बाकी रहा पार्थ का परफॉर्मेंस, उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। इसीलिए जो सीनियर्स रहते हैं, सीनियर्स का रोल बहुत भी इम्पोर्टेंट होता है टीम के लिए। तो हमारे सीनियर्स जितने भी थे उन लोगों ने जिम्मेदारी ली और अपना जो कैपेबिलिटी है वो उन्होंने दिखाया है और टीम को अब जीत के दिखाया। आप तो पहुंच गए फाइनल में, आपको कौन चाहिए आपके अपोजिट, पुरवरिम या फिर डेजर्ट एनमो? कोई भी आए, ये क्रिकेट है, जो जिस दिन जो अच्छा खेलता है वही जीतेगा। बस इतना है कि बेसिक्स जो है वो फॉलो करना है बस। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद और बढ़ते रहिए। वेल, मैन ऑफ द मैच ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम इज पार्थ for his invaluable contribution with the bat and with the ball. I would like to ask Mr. Raviraj Upadhyay to please present the trophy and the check to our man of the match awardee. Raviraj Upadhyay is the bank manager of Karnataka Bank, Udupi. Well, fabulous bit of batting as well as bowling. थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे हम उनके साथ, जो कि हमारे मैन ऑफ मैच अवार्डी हैं। बताइएगा कि विकेट कैसा बर्ताव कर रहा था, पहले की आपने बल्लेबाजी की, प्रथमेश ने बैटिंग की स्टार्टिंग में, बाद में आपने आकर जो आपने बाहें खोली, आपने जो बल्लेबाजी की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये जो जिस तरह का ऑर्गेनाइज किया है टूर्नामेंट, मेरा तो फर्स्ट टाइम है यहाँ पे और बताया जा रहा है कि काफ़ी सालों से चलता आ रहा है और इतना अच्छा ऑर्गेनाइज्ड है, वेल मेंटेन ग्राउंड है, विकेट भी बहुत अच्छा है। तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा सर को, जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर है, सब लोग है, कि इतना अच्छा टूर्नामेंट मिल रहा है। हाँ, संगेम जी को। और उसके बाद ये है कि हम लोग ने जो बैटिंग किया, जिस तरह से लास्ट गेम हम लोग खेले थे, जो लीग का गेम था, जो हम लोग का ये था कि टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करी तो हल्का विकेट थोड़ा स्टिकी था, तो आज हम अगेंस्ट गई हमारी सब चीज़ें। बट ये था कि प्रथमेश भाई ने जो स्टार्ट दिया है और उसके साथ जो बीच में चलता गया, तो मोमेंटम का गेम था पूरा, जो मोमेंटम चला फिर उसके बाद रुका ही नहीं फिर, तो इस कारण से चलती रही चीज़ है। और फिर जो प्रथमेश भाई ने जैसे स्टार्ट किया तो उस विकेट के हिसाब से आइडल स्कोर था। आपकी गेंदबाजी के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आपसे बॉल छूट रहा था और जिस हिसाब से आप पेस वेरी कर रहे थे, वो भी बेहतरीन था। हाँ, क्योंकि इस विकेट पे ज़्यादा तेज बॉल डालना नहीं है। अगर तेज बॉल डाला, हम दोनों ने जो, मैंने और विकास ने जो एनालिसिस किया था कि यार अगर तेज बॉल डालेंगे तो बैट पे आएगा ऑब्वियसली, और जो अगर बीच वाला लेंथ है, क्वार्टर लेंथ है, वहाँ से अगर स्पिन मिल रहा है तो फिर हमारी स्ट्रेंथ को बैक करेंगे हम लोग, तो इस कारण से हम स्लो तेज उसी में कर रहे थे हम लोग। So that's it from the presentation ceremony. All the very best for the finale. That was our man of the match awardee, Parth Sahani, for his 5 wickets and 50 runs. And that's it from the presentation. Bottom line, Priority Titans winning this game by 52 runs and entering into the finals.